ओके स्टूडेंट, स्टेप 2 इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस 10 है, डाइवेलेंट नंबर ऑफ एनाइंस वो 7 है। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 फॉर्मूलाज बनेंगे। टोटल फॉर्मूला स्टेप 2 में डाइवेलेंट के लिए 70 फॉर्मूलाज बनेंगे। अब इसने हमने वैलेंसीज को +2 और -2 को कैटाइंस और एनाइंस के लिए एक्स और वाई के ऊपर लिख लिया। इसके बाद हमने एक्स और वाई को जो है वो सफिक्स के तौर पे शिफ्ट किया और 2 आ गई। 2 रेशो को जब कैंसिल करेंगे तो वो 1:1 बन जाएगी और 1 को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1:1 बन रही थी इसको हम जब नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा एक्स वाई। जी स्टूडेंट, स्टेप 2 के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फॉर्मूला मेकिंग को और इसमें हमारे पास हैं O2 S-2 CO3-2 SO4-2 HPO4-2 C2O3-2 S2O3-2. These are the anions, oxide, sulfide, carbonate, sulfate, biphosphate, oxalate, thiosulfate. Beryllium Be+2, magnesium Mg+2, calcium Ca+2, barium Ba+2. Okay, now we are starting our chemical formulas. Again, let us see that their general formula is XY. So we are going to write them in the form XY. BeO, beryllium oxide. BeS, beryllium sulfide. BeCO3, beryllium carbonate. BeSO4, beryllium phosphate. BeHPO4, beryllium biphosphate. BeC2O3, beryllium oxalate. BeS2O3, beryllium thiosulfate. Now for magnesium, MgO, magnesium oxide. Mgs, magnesium sulfide. MgCO3, magnesium carbonate. MgSO4, magnesium sulfate. MgHPO4, magnesium biphosphate. MgC2O3, magnesium oxalate. MgS2O3, magnesium thiosulfate. Now come for calcium. CaO, calcium oxide. CaS, calcium sulfide. CaCO3, calcium carbonate, a well known. CaSO4, calcium sulfate. CaHPO4, calcium biphosphate. CaC2O3, calcium oxalate. CaS2O3, calcium thiosulfate. Okay, now come to barium. BaO, barium oxide. BaS, barium sulfide. BaCO3, barium carbonate. BaSO4, barium sulfate. BaHPO4, barium biphosphate. BaC2O3, barium oxalate. BaS2O3,
barium thiosulfate. Okay student, next element is cupric or copper. You will write CuO, cupric oxide or copper oxide. CuS, copper sulfide. CuCO3, copper carbonate. CuSO4, copper sulfate. CuHPO4, copper biphosphate. CuC2O3, copper oxalate. CuS2O3, copper thiosulfate. Now mercuric or mercury. HgO, mercury oxide, mercuric oxide. HgS, mercuric sulfide. HgCO3, mercuric carbonate. HgSO4, mercuric sulfate. HgHPO4, mercuric phosphate. HgC2O3, mercuric oxalate. HgS2O3, mercuric thiosulfate. Now this is ferrous. FeO, ferrous oxide. FeS, ferrous sulfide. FeCO3, ferrous carbonate. FeSO4, ferrous sulfate. FeHPO4, ferrous biphosphate. FeC2O3, ferrous oxalate. FeS2O3. Okay students, now it's time for manganese. MnO, manganese oxide. Mns, manganese sulfide. MnCO3, manganese carbonate. MnSO4, manganese sulfate. MnHPO4, manganese biphosphate. Next is MnC2O3, manganese oxalate. And the last one is MnS2O3, manganese thiosulfate. ZnO, zinc oxide. ZnS, zinc sulfide. ZnCO3, zinc carbonate. ZnSO4, zinc sulfate. ZnHPO4, zinc biphosphate. ZnS2O3, zinc oxalate. ZnS2O3, zinc thiosulfide. Okay, now this is stannous or tin. SNO, stannous oxide. SNS, stannous sulfide. SnCO3, stannous carbonate. SnSO4, stannous sulfate. SnHPO4, stannous biphosphate. SnCO3,
C2O3 stannous oxalate, SN S2O3 stannous thiosulfate. Okay student, this step is completed. After this video, new video will contain step 3.3. In the next video you will see how to make the formulas from trivalent cations and anions. So the step 3.3 will be done in next video.